Assalamu alaikum everyone, this is your own teacher Adar Khurshid, gives you enthralling, enthusiastic, energetic and a very powerful welcome into another video session from St. Gregory's High School, and we are doing today grade 7's English literature, and we are going to study novel Wuthering Heights, written by Emily Bronte. We've taken the very first session that we've talked about the biography of the novelist, and we've talked about her family background, her earlier life, and about this classic novel as well, Wuthering Heights. And as I gave you the homework to read the very first chapter of that, we are going to discuss that today. So tighten up, fasten your seat belts, and get ready for that. Kindly, those who want to answer me, raise your hands. But before going to all that, I'm going to start it by the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Okay, so I was asking that what was first chapter all about, and I would like to start it with Ahmed Ali. Ahmed Ali, kindly elaborate to me what was the first chapter all about? Yeah, Muhammad Hussain wants to answer. Walaikum assalam, walaikum assalam. Now, everybody, those those are only supposed to answer me, whom the name that I'm calling over here. Okay, Muhammad Hussain. Sir, I want to ask that I am joining this class now. Sir, please can you explain what you've done? What you've done? Yeah, we were talking about. We've just started the class, so you came a bit late. Okay, Ahmed Ali, I just asked you a question that what was the first chapter all about? Mr. Earnshaw, Sir, the first chapter is all about. Yeah. Sir, the first chapter is all about the children named Heathcliff and the family where he gone. Where he goes, yeah. Mr. Earnshaw, who was the family member, he went to Liverpool. And in the way he got found a child and he takes him to his house. His two children were not happy with the child. With the new child, because the two children. Okay. Fine. Good and great. I would like to ask furthermore about Halima Faisal. Halima Faisal, could you please tell me what was the purpose of going to Liverpool of Mr. Earnshaw? Sir, please repeat question again. I'm repeating it again for you. That why had Mr. Earnshaw been to Liverpool? Why did he go to Liverpool? Why did Mr. Earnshaw go to Liverpool? Sir, mostly. Yeah, try to answer it. सर वो पैदल गए थे और 60 माइल दूर था. मुझे ये नहीं पता वो क्यों गए थे, बट वो मुझे इतना पता है कि वो पैदल गए थे और वो 60 माइल दूर था और यही पता है सर. Okay, like according to you, he went by walk. Oh my gosh. Yes. Okay, Mr. Abir, I would like to ask you the question. Who was Hindley? No idea. Huria Saleh. Who was Catherine? Sir, the Catherine was the sister of Hindley, and Heathcliff and Catherine were very good friends. And Catherine was the daughter of Earnshaw. Okay, Heathcliff. It's not Heathcliff. Okay. Sir, he was the son of Mr. Earnshaw. Okay, yes, fine. Mr. Earnshaw. That's not okay. Mr. Ahmed Adib, I would like to ask you, what happened in the second part of the chapter? What happens actually in the second part of the chapter 1? Sir, I was absent that day.
So I sent that book. That's not the reason, Mr. Ahmadi. I sent that in the group on WhatsApp. I gave the notification on the portal and I asked you all to read that. That was the homework. Okay, fine. So I'm gonna start that now. Okay, everyone, here we have Wuthering Heights, and we've already talked about this, about Emily Bronte and all that. I hope that your tests have been very good. That here we have the very first chapter of this wonderful, mesmerizing, and a classic novel. Okay, and that is Wuthering Heights. Now we have the very first chapter with us. That is the Unsure of Wuthering Heights. I'm gonna go with a paragraph by paragraph elaboration. Okay, so I'm gonna start it with. Before I came to live here at Thrushcross Grange, I, Alan Dean, was nearly always at Wuthering Heights. My mother was employed there as a children's nurse, and I was allowed to play with the two children, Hindley and Catherine. I liked to do small jobs too and waited around the farm ready for anything that anybody would give me to do. Actually, this is the story starts by the introduction of the narrator. As you know that there is a narrator in every story. अगर मैं आपसे बात करूं तो हर कहानी का कोई बताने वाला होता है, नैरेटर होता है. तो बिल्कुल वैसे इस कहानी के भी नैरेटर है. उस कहानी के नैरेटर का नाम है नेली, या उसका एक्चुअल नाम क्या है, एलन डीन है. उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, नेली कहते हैं. उसका एक्चुअल नेम है एलन डीन. आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है, दिस इज एलन डीन. ठीक है. तो वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि मैं जब थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रहने आई, यानी शुरू में, तो वो क्या बताती है, I was nearly always at Wuthering Heights. Before I came to live at Thrushcross Grange, Alan Dean was nearly always at Wuthering Heights. नहीं, वो ये बता रही है कि आजकल वो Thrushcross Grange में रह रही है, लेकिन पहले वो कहाँ रहती थी. उसने अपनी जिंदगी तकरीबन Wuthering Heights में गुजारी है. ठीक है. Wuthering Heights एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे उसकी माँ जो है वो काम किया करती थी. वो बच्चों की नर्स थी, और बच्चों की नर्स होने की वजह से ये अपने बच्चे को साथ लेकर जाती थी, यानी एलन डीन को साथ लेकर जाती थी, और वो वहां पे क्या करती थी, उन दोनों बच्चों के साथ खेलती थी. ठीक है. हिंडले एंड कैथरीन, बच्चों का नाम क्या है. वुथरिंग हाइट्स में जो दो बच्चे थे उनका नाम था हिंडले एंड कैथरीन. ठीक है. और उसके साथ साथ वो छोटे मोटे काम भी वहां पे करती थी और हमेशा वेट करती थी अगर उनसे कोई काम करने को कहे तो. ठीक है. One fine summer morning at the beginning of the harvest in 1771, kindly. Beginning of the harvest मतलब होता है in the month of April somewhere. ठीक है. यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीजन किसे कहा जाता है, हार्वेस्टिंग का सीजन कहा जाता है जो फसल की कटाई होती है उसको. ठीक है. तो फसल कब पक जाती है, जनरली वो अप्रैल के टाइम तक पक जाती है. ठीक है. तो वो क्या कह रही, वन फाइन समर मॉर्निंग, गर्मी की एक अच्छी सी सुबह थी. ठीक है. जबकि फसल की कटाई का जमाना शुरू हुआ था, यानी अप्रैल था या मौसम में बाहर का टाइम था 1771 में. ठीक है. It was Mr. Anshaw, the old master, came downstairs dressed for a journey. बूढ़े से जो मालिक थे वुथरिंग हाइट्स के, वो नीचे आए, अपने कपड़े वपड़े पहनकर तैयार थे. ठीक है. क्योंकि वो कहीं जा रहे थे किसी सफर में. First he told Joseph the servant what was to be done during the day. What was to be done during the day. सबसे पहले उन्होंने जोसेफ जो वहां का सर्वेंट था उसको बताया कि क्या करना है आपको पूरा दिन, सारी बातें उनको बताएंगे, ये करना है. ठीक है. Then he turned to Henley and Catherine. फिर अपने बच्चों की तरफ मुड़कर क्या कहा, speaking to his son he said, now my young man, I'm going to Liverpool today. What shall I bring back for you? You may choose what you like, but it must be small, for I shall walk there and back. It's 60 miles each way, and that's a long distance. उन्होंने क्या बताया, अपने बच्चों की तरफ मुड़े, अपने बड़े बेटे से कहा जिसका नाम हिंडले था कि मैं वापसी में तुम्हारे लिए क्या लाऊं, लेकिन जो भी तुम कहोगे वो कोई छोटी सी चीज बताना, क्योंकि मुझे क्या करना है, वहां पे चलना है और फिर वहां से वापस आना है. कोई 60 मील का फासला है. ठीक है. He chose a toy violin. Then the master asked Miss Catherine. She was not quite 6 years old, but she could ride any horse in the stable, and so she chose a whip. Whip किसे कहते हैं, छड़ी को कहते हैं. हिंडले जो है ने टॉय वायलिन का कहा. टॉय वायलिन आप पता, वायलिन आपको पता, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसने टॉय वायलिन का कहा. समथिंग लाइक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड वायलिन वंस इन योर लाइफ एट लीस्ट. आपने सुना होगा सबने. ठीक है. तो उसने टॉय वायलिन मंगवाया और मास्टर ने अपनी छोटी सी बेटी से पूछा, जो कि तकरीबन थी तो 6 साल की, लेकिन वो जो उनका स्टेबल था जहाँ घोड़े खड़े होते हैं, वहां पे तकरीबन रखे हुए घोड़ों को वो चला सकती थी. तो उसने क्या किया, अपनी सोच के मुताबिक डिमांड की, उसने whip मंगवाया, छड़ी मंगवाई. He did not forget me, for although he was rather strict sometimes, he had a kind heart. And let me tell you,
That is hurt and hurt. Like if I would say H-U-R-T is not hurt, like hurt. I hurt you. You hurt me. H-U-R-T. इसका मतलब होता है दुख देना, तकलीफ पहुंचाना. That is H-E-A-R-T is called hurt. Like that. You hurt my heart. Like that. तुमने मेरा दिल दुखाया. तो क्या कहेंगे? You hurt my heart. Hurt has a long sound. Hurt like that. तो वो क्या कह रही है कि वो मुझे भी नहीं भूले, यानी वो छोटी सी बच्ची जो बहुत बड़ी हो गई है, जो इस कहानी की स्टोरी टेलर है, वो क्या कहती है, कभी कभी वो मेरे साथ सख्त हो जाते थे लेकिन उनका दिल बड़ा अच्छा था. He promised to bring me some apples and pears. उन्होंने मुझसे कुछ नाशपाती और सेब लाने का कहा, मैं वापसी में तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट ले आऊंगा. Then he said goodbye to his wife, kissed his children and set off. उसके बाद अपनी वाइफ से क्या किया, अलविदा कहा, बच्चों को प्यार किया और चला गया. It seemed a long time to us all, the 3 days that he was away. Little Catherine often asked when her father would be home. बहुत ऐसा नहीं लगता है जब कभी कोई जाए कहीं पे और बिलखुसूस अगर आपसे कोई वादा करके जाए, जैसे आपके फादर ऑफिस ही जाते हैं और आपसे कहते हैं that I would bring you your favorite toy today or I would bring you your favorite food today. So उस दिन उनका ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है फादर को गए हुए ऑफिस, और जब वो वापस आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा इंतजार रहता है, एक्स्ट्रा अवेटेड होता है इंसान कि यार मेरे फादर आएंगे, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे, जो मुझे पसंद है वो लेकर आएंगे. तो बिल्कुल वैसे उन लोगों के साथ हुआ कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया. The 3 days that he was away, 3 दिन वो बाहर थे, ठीक है, 3 दिन के लिए गए थे. Little Catherine often asked when her father would be home. छोटी सी बच्ची थी, पूछती रहती थी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, जैसे होता है ना छोटे बच्चे. Miss Earnshaw expected her husband by supper time. Oh, Mrs. Earnshaw expected her husband. Okay, there is another word I would like to write over here. This is expected, and there is another word, A-C-E-P-T-E-D. This is accepted and this is accepted. Accepted का मतलब होता है उसके अलावा, ठीक है, और expected का मतलब क्या होता है, सॉरी, expected का क्या मतलब होता है, किसी का इंतजार करना, और accepted का क्या मतलब होता है, accepted का मतलब होता है कबूल करना. It seems quite similar, homophones लगते हैं. Expect means to expect someone and accept means to accept someone. लेकिन हमारे यहाँ जनरली बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गंबल अप कर देते हैं. This is accepted and expected, and there is another word, accepted. That is another word. Husband by supper time. Supper किसको कहा जाता है? Supper कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए हमारे यहाँ मेन कोर्स मील्स एक दिन में 3 है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो जो हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब हमें भूख लगती है कुछ खाते हैं, तो दैट इज नोन एज ब्रंच. B-R-U-N-C-H, brunch, like we have in our school. That is known as brunch. But the thing, or the I would say edible, or the time of eating, which comes in between, okay, which comes in between the lunch and the dinner is known as supper. जो शाम में हम नाश्ता करते हैं ना, जनरली स्नैक्स लेते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, that is known as supper. तो मिस्टर अर्नशॉ जो है वो तवक्को कर रही थी कि जो उनके हस्बैंड हैं यानी मिस्टर अर्नशॉ, वो शाम की चाय के वक्त तक आ जाएंगे, तीसरी शाम यानी जो उनके पास यानी तीसरे दिन की. Although we ate our meal late, there was no sign of him coming. The children asked if they could stay up and wait for him. Then at last, at about 11 o'clock, the door opened quietly and the master stepped in. He threw himself into a chair. He looked happy and glad to be home. यहाँ आप देख सकते हैं क्या हुआ. उन सब ने अपना खाना उस दिन देर से खाया, बच्चे सो भी नहीं रहे थे क्योंकि सबको इंतजार था. उन्होंने कहा कि क्या हम जाग जाएं, पापा का वेट करें. तो रात 11 बजे बिलाकर जो है, उस वक्त के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा वक्त था ये, रात 11 बजे उनके फादर आए, आहिस्ते से दरवाजा खुला और वो अंदर आए और आकर वो कुर्सी पर बैठ गए. ठीक है, he looked happy and glad to be home. उन्हें घर आकर लगता था खुशी हुई थी, वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रहे थे. But he told the children to wait patiently, for his long walk had made him very tired. लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा कि थोड़ी देर सब्र करो क्योंकि मैं बड़ा थक गया हूँ. ठीक है, मैं इतने लंबे सफर के बाद. At the end of it, I was almost worried to death. He said, opening his coat, which he held wrapped up in his arms. Look, I have never been bothered so much by anything before, but you must take him as a gift of God. अच्छा, तो होता क्या है? At the end of it, I was almost worried to death. वो क्या कहता है? He said, opening his coat, उसने क्या कहा? At the end of it, I was almost worried to death. मतलब क्या है? मैं इतना थक गया था कि मानो लगता है मर ही जाता. और ये अपना कोट खोलते हुए क्या कहते हैं? देखो बेटा, I've never been bothered so much by anything before, but you must take him as a gift of God. ठीक है, मैं कभी भी किसी चीज से इतना परेशान नहीं रहा हूं, लेकिन
ये जो चीज है तुम इसे एक तोहफे के तौर पर तस्लीम करना। ये बात मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। वो आते हैं घर पे और अपनी सूरत हाल बताकर कहते हैं कि मैं इतना परेशान जिंदगी में कभी नहीं हुआ, मानो लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बच्चों से कहते हैं मुखातब होकर कि देखो मैं कभी भी किसी चीज को मैंने परेशानी के तौर पर नहीं लिया और तुम भी इसे खुदा का तोहफा ही समझना। अब वो क्या बात कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, द सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे। द सेकंड पार्ट इज हियर, द स्ट्रेंज चाइल्ड। We crowded round looking over Miss Catherine's head. I saw a dirty black-haired boy, big enough to walk and talk. Indeed, his face looked older than Catherine's when he was set on his feet. He only stared round and repeated some words that nobody could understand. I was frightened. What would they do with such a wild, dirty child? ठीक है, we crowded round looking over Miss Catherine's head. हम सब एक जगह जमा थे। और ओवर का मतलब क्या होता है, यानी मिस कैथरीन छोटी सी थी, 6 साल की थी, तो उनके पीछे एक लड़का खड़ा था। ठीक है, उनको उसके सर के ऊपर से नजर आ रहा था। मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है जो कि मुझसे कद में बड़ा है, तो वो मुझे दूर से नजर आएगा। ठीक है, तो सब खड़े होकर देख रहे थे किसको, कैथरीन को। तो उसके पीछे उन्होंने क्या देखा, एक ब्लैक हेयर बॉय देखा जो बहुत ज्यादा गंदा सा दिख रहा था। ठीक है, इतना बड़ा था वो कि खुद से चल सकता था और बोल सकता था। उसका जो चेहरा है वो उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कैथरीन से बड़ा है। ठीक है, he was set on his feet, वो खड़ा था उसके पीछे और वो इधर उधर देख रहा था और कुछ अल्फाज बार बार दोहरा रहा था। न जाने वो क्या कह रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। I was frightened, मैं घबरा गई। What would they do with such a wild and dirty child? मैं डर गई कि न जाने इस गंदे से और इस जंगली दिखने जैसे बच्चे के साथ ये लोग क्या करेंगे। The master tried to explain that he had pitied the child and decided to give him shelter under his own roof. Pitch का मतलब होता है तरस, pitied मतलब होता है तरस खाना। मिस्टर अर्नस्ट मास्टर ने बताया, जो मालिक थे, उन्होंने क्या बताया, okay, I have a few hands which have been raised. Is it okay now? Okay, so what I said, that master tried to explain that he had pitied the child and decided to give him shelter under his own roof. Is my voice okay now? The master tried to explain that he had pitied the child and decided to give him shelter under his own roof. He told us quickly that he had seen the child dying of hunger, homeless, unable to speak any known language, in the streets of Liverpool. Since the master had little money or time, he thought he should take the child home with him at once because he was determined not to leave him where he had found him. मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बच्चे पर तरस खाया। जैसे उन्होंने उसको देखा, ठीक है, तो उन्होंने फैसला किया कि उसे क्या करेंगे, पनाह देंगे, रहने की छत देंगे। और उन्होंने बताया कि इन्होंने उस बच्चे को कहाँ देखा था, उन्होंने बच्चे को लिवरपूल की सड़कों पे देखा था कि ये भूख से तड़प रहा था, बेघर था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ऐसी लैंग्वेज बोल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तो उसने फौरन फैसला किया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, ठीक है, और ना इतना वक्त था कि उसकी देखभाल के लिए वहां कोई इंतजाम करते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं अपने घर ले जाऊं और वहीं पे से क्या करूंगा, रखूंगा। ठीक है, Miss Anshaw then told me to wash the boy and give him clean clothes and let him sleep with the children. ठीक है, उसके बाद वो बता रही है, कौन, नेली बता रही है कि मिस एंशॉ ने मुझसे कहा कि मैं जाकर इस बच्चे को नहलाऊं, इसे साफ सुथरे कपड़े पहनाऊं और फिर बच्चों के साथ इसे सुला दूं। बच्चे मतलब हिंडले एंड कैथरीन। Hill and Catherine were content to just look and listen until there was peace again. Then they both began searching their father's pockets for the presents he had promised them. ठीक है, अच्छा, उस वक्त तक तो बच्चे कैथरीन और हेनले दोनों खामोशी से सुनते रहे जब तक खामोशी नहीं हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी जाकर अपने फादर को, ये जो गंदा सा बच्चा आप यहाँ पे देख रहे हैं रोता हुआ, ये कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गंदा सा बच्चा, आगे आपको कहानी समझ आएगी। नेली है इस कहानी में, हेनले है, हीथक्लिफ है और कैथरीन है। ठीक है, Hill and Catherine were content to just look and listen until there was peace again. Then the both began searching their father's pockets for the present he had promised them. वो जो तोहफा उन्होंने मंगवाया था उसे ढूंढने लगे वो सब। Hill was a boy of 14, but when he drew out what had once been a toy violin, now crushed to pieces in his father's coat, he cried loudly. When Catherine heard that the master had lost her whip while looking after the stranger, she made a nasty face at the boy and spat at him. Her father then hit her to each
to teach her better manners. देखें क्या होता है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं खड़ा हुआ लंबा सा रो रहा है, ये कौन है? ये जो है हिनले है, जिसको जब पता लगा कि इसका वायलिन इस लड़के की वजह से टूटा है तो ये रोने लगा। और ये जो छोटी सी बच्ची आपको नजर आ रही है, ये कौन है? ये क्या कहते हैं, कैथरीन है। और जब इसको पता लगा कि ये सारा जो मुआजरा हुआ है, उसका विप भी उसके फादर ने गुमा दिया, गुम कर दिया, उसका किसका ख्याल रखने में? हीथक्लिफ का ख्याल रखने में। ये जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है ये मिस्टर अंशो है, जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है ये कौन है? हीथक्लिफ है। और ये हिनले है, ये नेली है, और ये कौन है? ये यहाँ पे हमारे पास है कैथरीन। ठीक है, तो हिनले वैसे तो 14 साल का था, लेकिन जब उसे ये बात पता लगी कि उसका टॉय वॉयलिन जो है वो टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया उसके कोट में ही, तो वो जोर जोर से रोने लगा। और कैथरीन को जब बात पता लगी कि उसके बाप ने जो है उस बच्चे का ख्याल रखने में ही उसका विप गुम कर दिया, तो उसे उस बच्चे पे बड़ा गुस्सा आया। मानो वो ये समझ रही थी कि उस बच्चे की वजह से सब कुछ हुआ है। उसने उसके ऊपर थूका, गुस्सा किया। ठीक है, और उसके बाप ने दोनों को समझाया बच्चों को कि आपको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। Then children refused to share a bed with him or even to allow him in their room. I did not want him either, so I put him near the top of the stairs, hoping that he would be gone by the next day. In the night, the child crept to Mr. Anshaw's door. The master found him there the next day and asked why he was there. I had to confess, and as a punishment for my cruel behavior, I was sent out of the house. क्या है उस बच्चे, अच्छा अगले दिन क्या हुआ, बच्चों ने उसको, आपको पता होगा कि अंशो ने कहा था कि उस बच्चे को क्या करना, तुम जाके नहला देना, अच्छे कपड़े पहना के बच्चों के साथ सुला देना। लेकिन बच्चों को जब पता लगा कि उन दोनों का तोहफा जो है इसकी वजह से खराब हो गया, बर्बाद हो गया, यानी वायलिन उसकी वजह से टूटा और वे उसकी वजह से गुम गया, तो उन दोनों ने अपने बेडरूम में उससे सुलाने से इनकार कर दिया। और नेली कह रही है कि मैं भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, तो फिर मैंने क्या किया, उसे सीढ़ियों के पास ही ऊपर कहीं पे छोड़ दिया, ये सोचकर के अगले दिन वो कहीं चला जाएगा। लेकिन वो रोता रोता बच्चा कहाँ चला गया? अंशो के कमरे तक गया। अंशो ने उसे क्या किया, अपने पास रखा। और सुबह उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो नेली बता रही है मैंने अपनी गलती तस्लीम की और सजा के तौर पे मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। I went back a few days later, for I thought Miss Ancho did not want me to stay away forever. I found they had named the boy Heathcliff. मैं कुछ दिनों बाद जब वापस गई, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि अंशो जो है मुझे नहीं रखना चाहते हमेशा के लिए, तो मैंने देखा कि उन्होंने उस बच्चे का नाम हीथक्लिफ रखा था। और हीथक्लिफ नाम बड़ा, आप कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। It was the name of Miss Anshaw's younger son who had died when he was a baby. It was the only name they gave him, and it was used both as his first name and his last one as well. हीथक्लिफ जो है ये कौन, किसका नाम था? अंशो का एक सबसे छोटा बच्चा था, जो कि कैथरीन से भी छोटा था, जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जब वो छोटा था तो उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को वही नाम दिया। अच्छा, इसको उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, एक होता ना कि अपना नाम दे देना, जैसे कि हीथक्लिफ अंशो, उन्होंने उसको बस उसका फर्स्ट और सेकंड नाम हीथक्लिफ रख दिया था। Miss Catherine and he were soon very good friends, but Hindley hated him. I hated him too, and we treated him very badly. जो मिस कैथरीन थी, छोटी वाली जो बहन थी हिनले की, उसकी और हीथक्लिफ की तो जल्दी दोस्ती हो गई, लेकिन हिनले और नेली बता रहे हैं कि हम दोनों से शदीद नफरत करते थे। Serena wants to ask something. You could write me on the chat, Serena. The new child causes jealousy. He's seen the silent, patient child, perhaps because he was used to bad treatment. He never cried when Hindley beat him. If I pinched him, he would just breathe deeply and open his eyes as he had hurt himself by accident. Hindley's behavior made old Miss Anshaw very angry when he discovered his son hurting Heathcliff. He always sympathized with Heathcliff and punished Hindley. It is true that Hindley was usually to blame. The master loved this little stranger far more than he loved his own daughter, who was too naughty and mischievous to be a favorite. So from the beginning, Heathcliff caused bad feeling in the house. हुआ क्या, Heathcliff जो है ज्यादातर साइलेंट रहता था, वो बहुत ज्यादा सब्र करने वाला बच्चा था। ठीक है, ऐसा लगता था कि वो बुरे बर्ताव सहने का आदी हो चुका है। जब कभी भी हिंडले उसे चूटी नोचता था तो वो क्या करता था, बस आहस की आवाज निकालकर खामोश हो जाता था। ठीक है, लेकिन कभी भी वो रोता नहीं था। ठीक है, ऐसा लगता नहीं, वो जस्ट ब्रीथ डीपली, जोर से सांस लेकर ऐसा लगता था कि उसे कोई दर्द हुआ बस। और हिमसेल्फ बाय एक्सीडेंट, और वह इस तरह के जताने की कोशिश करता था कि उसे हिंडले ने जानबूझ के नहीं मारा बल्कि गलती से हुआ। लेकिन जब अंशो को हिंडले के बिहेवियर के बारे में पता लगा, हिंडले कौन था, अंशो का बेटा था, वो तंग करता था हीथक्लिफ को, तो हिंडले के बर्ताव के बारे में जब पता लगा कि वो किस तरह का बर्ताव हीथक्लिफ के साथ करता था, तो अंशो बहुत नाराज हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, हीथक्लिफ को सिंपथाइज किया, उसे सब्र दिया, यानी उसे आप कहते हैं ना बेटा चुप हो जाओ, ये गलत होता है, इस तरीके से किया, और उन्होंने अपने बेटे हिंडले की पिटाई की।
और अक्सर और बेशतर हिंडले की गलती होती थी। लेकिन जो मिस्टर अर्नशॉ थे वो अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत दिखाते थे किसके लिए, हीथक्लिफ के लिए, जो कि एक अजनबी और यतीम सा लड़का था, जिसकी वजह से एक घर में एक बड़ा बुरा सा माहौल बन रहा था और बच्चे इस लड़के से ज्यादा जलने लगे। इन्होंने जलन होती थी कि कल का आया हुआ बच्चा हमारे फादर की ज्यादा टेंशन गेन कर रहा है और हमें हमारे फादर की मोहब्बत नहीं करते। हालांकि जो कैथरीन थी वो इतनी प्यारी और शरारती थी, इतनी छोटी सी थी कि कोई भी उससे प्यार करता, लेकिन वो उससे भी ज्यादा प्यार उस लड़के से करते थे। Mrs. Anshaw died less than 2 years later, and by then Hindley had already learned to think of his father as a stern, unfriendly person. Heathcliff was treated like a favorite son, and Hindley hated him more and more. हुआ क्या, मिसेस Anshaw जो थी वो 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। तब तक हिंडले अपने बाप को एक बहुत बुरा आदमी समझ चुका था और वो ये समझता था कि उसका बाप जो है एक अनफ्रेंडली पर्सन है जो उसकी पिटाई करता है। हीथक्लिफ को एक फेवरेट सन की तरह ट्रीट किया जाता था घर में, जिससे हिंडले की जो नफरत थी उसके लिए और ज्यादा बढ़ गई। He thought that this strange child had stolen all his father's love. I too often wonder why my master admires this unfriendly boy so much. I never saw him show any sign of real love towards Miss Anshaw for his kindness. वो कह रही है कि हिंडले जो है उससे नफरत करता था और एलन डीन कह रही है कि मैं भी उससे नफरत करती थी और सोचती थी कि न जाने क्यों मिस्टर एंशो इतनी ज्यादा उससे मोहब्बत दिखाते हैं, जबकि जवाब में हीथक्लिफ किसी तरह की मोहब्बत का इजहार भी नहीं करता। When the children all fell ill at the same time, I had to look after them. It was then that my feeling changed towards Heathcliff. जब तमाम बच्चे बीमार पड़ गए तो उस वक्त जो है मेरी फीलिंग हीथक्लिफ के लिए तब्दील हो गई। It was then that my feeling changed towards Heathcliff. He was dangerously ill and I had to nurse him all the time. वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया और मुझे उसका ख्याल पूरा वक्त रखना पड़ता था। He was the quietest child anyone could have nursed, and he seemed grateful for my help. और वो एक होता है ना कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो रोते हैं, शोर मचाते हैं, तो वो कह रही वो बिल्कुल क्वाइटेस्ट चाइल्ड था, बहुत अच्छा बच्चा था, हमेशा सुकून से रहता था और जब कभी भी मैं उसकी हेल्प करती है, उसकी देखभाल करती तो वो मेरा शुक्रगुजार होता। The difference between him and the others who both gave me a great deal of trouble made me like Heathcliff better. और जबकि दोनों बच्चे हिंडले और कैथरीन जो है उसे बहुत तंग करते थे, वो भी उन तीनों का ख्याल रखती थी, लेकिन जो ज्यादा बेहतर ख्याल वो रख पाती थी वो हीथक्लिफ का, क्योंकि वो खामोश सा बच्चा था और हमेशा उसकी बात सुनता था और उसकी अताअत भी करता था, शुक्रगुजारी भी करता था। Heathcliff recovered and the doctor praised me for caring for him so well. Heathcliff बहुत जल्दी तबीयत उसकी ठीक हो गई, रिकवर हो गया, बेहतर हो गया और डॉक्टर ने मेरी बड़ी तारीफें की कि मैंने उसका बड़ा अच्छा ख्याल रखा है। This pleased me very much and I became fond of Heathcliff. इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि हीथक्लिफ की वजह से मेरी तारीफ हुई है और फिर मैं हीथक्लिफ की क्या हो गई, आप कह सकते हैं कि उसको अच्छा समझने लगी। You have caused me to receive such praise. Now Hindley was alone in his hatred of Heathcliff. अब पूरे घर में सिर्फ कोई एक शख्स बचा था जो नफरत करता था हीथक्लिफ से, तो वो हिंडले था, क्योंकि कैथरीन तो पहली उसकी दोस्त थी, अनशॉ बहुत प्यार करते थे उससे और अब नैली का भी उसने दिल जीत लिया था। Hindley is sent to college. In a few more years, old Mr. Anshaw began to grow weaker. He had been active and healthy, but his strength left him suddenly, and he had to spend all his time in a chair. This made him extremely difficult, and he always became very bad-tempered. If anyone did or said anything against Heathcliff, nothing and nobody could please him except for, देखिए यही वो एक्सेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो होता है एक्सपेक्ट, पी आ जाता है, ई एक्स के बाद एक्सपेक्ट हो जाता है, और एक होता है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है इसके अलावा। Except his favorite, he seemed to believe that because he liked Heathcliff, everyone else hated the boy and wanted to hurt him. लेकिन क्या होता है, कुछ अरसे में जो है मिस्टर अनशॉ वो हो गए बहुत ज्यादा बीमार और जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए। वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे थे और इतने ज्यादा सेहतमंद नहीं रहे थे, लिहाजा उनकी ताकत कम हो गई और वो he had to spend all his time in a chair. वो ज्यादा वक्त कुर्सी में गुजारते थे सारा टाइम ज्यादातर, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, ठीक है, और इसी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए थे, बैड टेम्पर्ड हो गए थे। बैड टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा और शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बार बार गुस्सा करने वाला। अगर कोई भी उन्हें कुछ कहता, ठीक है, या हीथक्लिफ को कुछ कहता तो वो उसके ऊपर भड़क उठते, ठीक है। नथिंग एंड नोबडी कुड प्लीज हिम, मतलब उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी पूरे घर में सिवाय हीथक्लिफ के, ठीक है, उनके फेवरेट के। अच्छा, उन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि हीथक्लिफ को वो पसंद करते हैं और सब जो है हीथक्लिफ के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। He seemed to believe that because he liked Heathcliff, क्योंकि वो Heathcliff से प्यार करते हैं, everyone else hated the boy and wanted to hurt him. हर कोई उस लड़के से नफरत करता था और उससे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मतलब वो बहुत ज्यादा ही उसके लव में एक्सट्रीम हो गए थे, कि बहुत ज्यादा केयरिंग हो गए थे, सिवाय उनके और कोई उन्हें पसंद आता ही नहीं था। Once or twice
Once or twice, Hindley could not control himself and tried to injure Heathcliff in front of his father. एक और 2 मरतबा हिंडले ने क्या किया, अपने आप पे काबू नहीं रख पाया और हीथक्लिफ की पिटाई करने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अपने फादर के सामने. The old man would become furious and try to beat Hindley. And वो बहुत खतरनाक हो गए, डेंजरस हो गए और अपने बेटे को स्टिक से मारा, छड़ी से मारा. And when he found he was not strong enough to do so, he would shake with rage. और जब उन्हें लगा कि उनके पास इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने बेटे को छड़ी से मार सकें, तो वो फिर गुस्से से कांपने लगते थे. रेज कहते हैं गुस्से को, शेक विद रेज समझ गए, गुस्से से कांपना. Last it was feared, not fear. It's feared. Fear होता है, feared हो गया. That if this continued, the old man would kill himself. So Hindley was sent away to college. ठीक है, बिलाखिर ये खतरा महसूस होने लगा था, अगर ऐसे ही चलता रहा और ये जो है अर्नशॉ इतनी बीमारी में उसे मारने की कोशिश करे, तो ऐसा ना हो कि वो मर ही जाए, अपने आप को वो मार ले इससे. तो हिंडले को कहाँ भेज जाएगा, कॉलेज भेज जाएगा. Though his father thought that Hindley would never do well at anything. लेकिन हिंडले के फादर का यही ख्याल था कि हिंडले किसी भी चीज में अच्छा हो ही नहीं पाएगा. I hope that when Hindley had gone, we should have some peace. We might have done, except for 2 people, Miss Catherine and the servant Joseph. ठीक है, उसने क्या कहा कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि जब हिंडले चला जाएगा तो ये जो झगड़ा लगा रहता था घर में वो खत्म